Dola ji, coming to you, archery is one such sport जिसमें हम always ही नजदीक गए हैं until the Paris 2024 जहाँ पे हरविंदर सिंह got the gold medal and टोक्यो में उन्होंने ब्रोंज जीता था, but it is one sport जिनमें Olympics में हम हमेशा से थोड़ा चूक जाते थे. So every time an athlete fails, it's again a process of 4 years for the next Olympics trials, and every day and the grind is going on. So उस फेस को एक एथलीट कैसे डील करता है? जो एथलीट हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब सबको वो चीज फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई कंटिन्यू फर्स्ट नहीं हो सकते हैं. उनको अप डाउन, उनका ग्राफ अप डाउन होते ही रहता है, तो वो फेज उनको करना पड़ता है. उसके लिए उसको माइंड काफी स्ट्रांग होना पड़ता है कि मुझे कम बैक करना है. अदरवाइज आप कभी कम बैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी इन्होंने बता रहे थे कि कोई भी सेक्टर में जाओ आपको वहां अप डाउन होते रहेगा, आपको वहां फेल्यूर मिलेगा, सक्सेस भी होगा, बट आपको वहां कैसे सक्सेस को सस्टेन करना है, आपका परफॉर्मेंस को कैसे पीक में रखना है, वो डिपेंड करता है आप कैसे उनको ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे मेंटली आप स्ट्रांग है, कितना फोकस हो आप अपना गेम के लिए. और ओलंपिक का जो बात कर रहे, जो हम लोगों का फर्स्ट टाइम आर्चरी टीम जब क्वालिफाई किया था 2004 एथेंस ओलंपिक, जहां पर मैं फर्स्ट टाइम क्वालिफाई की थी, तो उसके बाद कंटिन्यू लेडीज टीम हमारा क्वालिफाई करते गए हैं. और हर बार हम लोग थोड़ा सा 1 पॉइंट, क्योंकि मैं 2 ओलंपिक खेली हूँ, फर्स्ट एथेंस में हम लोग हारे थे क्वार्टर फाइनल में 1 पॉइंट के लिए. सेकेंड 2008 बीजिंग ओलंपिक हमारा टीम हारा था 2 पॉइंट्स के लिए. तो एक हर बार हमारे साथ ये होता है. तो लेकिन मुझे लगता है इस बार भी लास्ट भी हमारा हम लोग हार गए मिक्स टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच में, जहां काफी अच्छा किया अंकिता और लेकिन फिर भी वो स्टेज को हमें लगता है हम लोग पहले, जो अगर कंपेयर किया जाए जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब इक्विपमेंट्स का काफी प्रॉब्लम था, क्योंकि काफी कॉस्टली गेम था, एक्सपोजर उतना ज्यादा हमारा होता नहीं था. बट लास्ट फ्यू इयर्स हमारा जो भी टीम है सभी गेम में काफी अच्छा एक्सपोजर है, काफी इक्विपमेंट फैसिलिटी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी आ रहा है. उस हिसाब से आप देखेंगे हर गेम में ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है, काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है. बट सक्सेस अगर देखेंगे इस बार जो ओलंपिक में काफी मेडल हम लोग हारे हैं ब्रॉन्ज मेडल मैच में, जो अगर ओवरऑल देखा जाए जो हमें मेडल कम मिला है. अदरवाइज अगर आप रिजल्ट वाइज देखेंगे जो काफी मैचेस है जो हम लोग हारे ब्रॉन्ज, मतलब हमारा स्पोर्ट्स इंप्रूव कर रहा है. बट उस टाइम में कौन कितना अपना, क्योंकि हमारा जो मैचेस होता है आप देखे होंगे जहां 20 सेकेंड में 1 एरो, तो उस सिचुएशन में आपका विन कंडीशन आप कितना कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि कंटिन्यू अनाउंस हो रहा है जो आपका ओपोनेंट इतना पॉइंट में लीड में है. और इस बार पेरिस में मैं भी थी जब मैच हो रहा था, 15,000 क्राउड, तो उस एरिया में मतलब अपना जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी हम लोग ऐसे क्राउड में प्रैक्टिस करते नहीं है. जो सिचुएशन हमें इंडिया में क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग हर टाइम उसी पोजीशन में जाएंगे. क्योंकि एक एथलीट के लिए जो 4 इयर्स जो उनका मेहनत होता है, उसको नहीं पता है जो नेक्स्ट 4 इयर्स में आई विल कम बैक और नॉट, क्योंकि उनका टाइम बहुत लिमिटेड होता है, जो हमें फिर क्वालिफाई करना पड़ता है ओलंपिक के लिए, नहीं तो नहीं. तो हर एथलीट चाहते हैं हम मेहनत करें एंड उस पोजीशन में जाके मेडल लेके आए देश के लिए. आप लोगों से ज्यादा उस एथलीट का ये रहता है जो हमें मेडल मिले, जो हम उस गेम के लिए. तो सभी मेहनत करते हैं, सभी प्लेयर, और वो चाहते हैं जाके करें, बस छोटा छोटा कुछ के लिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. Thank you, Dola. I'll ask Anju. Anju, well, I won't say it's a comeback really. I'm sure you always had it in your mind that I'm going to, become a coach after, I finish competing as an athlete. But, if we can call it a comeback as a coach, a mentor, you now have your own academy. We agreed that, an athlete's life is full of comebacks. Always, you're either up or you're down. And it needs mental strength and resilience. How do you put that comeback spirit into the young boys, girls that you're coaching and mentoring? After my career, it was a big decision from my side, because I gave almost 6 years for my family, completely 6 years. And then I was feeling like some kind of disappointment that I was always traveling, I was always doing competition, and then six years it was a standstill. Definitely for anybody, we feel like we are doing nothing.
So I decided to come back in a form of like a coach or mentor. I started my academy in Bangalore, and I have got 16 beautiful girls from all part of India, all of them from very humble background. And so it was like, see, we all are sports people. We are celebrating our life. We are enjoying everything. And I believe this is our duty to give back to society. And it's almost 24 years learning what we have with us. So it's we can give back to our society. So when I started academy, initially it was a struggle for us because as athletes we only know how to perform, but so financially we should be like we have to find funds, and we don't know how to ask people. So it was a struggle for me in the initial stages, but luckily, yeah, I should thank Banerjee. He came first with a big sponsor for our academy, and from there we started. So now, after 3 years, my academy is having a world championship medal, junior world championship medal, and we are aiming for next Olympics. I hope the medal which I lost, one of my ward will come back with that medal. So it's always a struggle for us. These new generation kids, it's very difficult to tackle them. Because their mental, because they are exposed to everything. See, phone, and they are always worried about, oh, today my Instagram reel is not hitting that much, what to do. So that is their worry. But it's not like I am not jumping far. That is not their worry. So we have to make them understand that this is just nothing, and come back and concentrate in your training. And one day everybody will be following you. So that, to keep that in their mind, we have to tell, do this, do that. And see, sometimes, no, it's difficult for them to like understand what we are, maybe they are thinking like we are old people. That's why we are telling like this. But some values we always should keep, and it's a struggle for us to make them understand what value, what we are talking about. But still I enjoy. So it's a beautiful small place in Bangalore. Hopefully, maybe next Olympics, as I said, we can celebrate more from my academy with support of all the well-wishers. So it's not a comeback, it's my passion. Yes, and more power to you for that passion, for driving the younger generation forward. Nikhat, tell us. We all know that when we are on a high, when you have won a gold medal at the CWG, you're a world champion, we have everyone with us, we have everyone calling us, we have everyone telling us how great we are. And then we have one loss, the media writes you off, only some friends stay with you. And we at Revsportz have tried to follow our athletes in wins and losses through their journey, because everything makes up the greatness of an athlete, not just his or her win. So Nikhat, tell us that after Paris, who has been with you? Is it your parents, your mother, who has been with you in this comeback that you're now, you were always there as a world champion, but who has been with you? Well, after Paris, honestly, I felt no one was there with me. I mean, they were there, but still they were not there. I felt like that because my parents, I never shared my struggles with them, what I face in sports, because they don't understand much about that. Obviously, my mother won't understand anything about sports. She doesn't have any knowledge about sports. And my sisters both are from the medical field. They don't know anything about sports. My younger sister, she's too small to understand me. And when I came back from Paris, obviously they in my community, when someone's come from abroad, when someone wins, or when someone pass out their 10th standard or degree, whatever, they just फूल पिनाते हमारे यहाँ पे, like this, they
put garlands and they give you sweets and all, those just to celebrate it. So everyone was coming with garlands, flowers and all. I was feeling so awkward. मैंने कोई medal नहीं जीता जो everyone is celebrating. Obviously, I was not in that zone to enjoy that function. But yeah, they were trying their best to make me happy, not to make me feel like I didn't win any medal. I lost in Paris. But yeah, they were trying their best to make me happy. But somewhere in my, deep down in my heart, I was not happy. I was unhappy. I wanted to people to leave me alone. I want some privacy. But then after a few days, I have decided to go on a trip to Kashmir, on a solo trip. I enjoyed my 5 days of trip and I came back home. Then I sat down. I have decided ki okay Nikhat, Paris is done, finished. It's in the past. Now you decide you wanna sit and cry over your past, or you wanna move on and work hard for your future. So then I decided, chalo, jo hua ho gaya, let's move forward and think about LA Olympics. But yeah, as I said, there was a conflict between international federation. They were still going on. So I was waiting for a clear picture from our federation. So once the calendar comes out for next year, I would plan according my schedule, like which competition I'm going to play in 2025. So now I'm training in ASI Pune with the young boxers. So now I'm full-fledged, I'm back in training. I mean, yes, and what happened is, like, usually when I win World Championship medal or Commonwealth medal or any medal, like my phone is filled with lot of notification from Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. They just congratulate you, they celebrate you. But once you lose in any competition, the phone is all silent. Like the notification is like fully off. Like no one messages you, everyone just forget. I understand like some people might think ki, are kya hi message kare, she must be, heartbroken, she must be sad, kya hi bolu is time. So let's leave her alone. But at least you could just put a message just to, bring a smile on my face, and me thinking, okay, yeah, he's there, he's just a call or message away. So at least people can do that. Or people can at least be kind, not to just, talk bad about someone during the bad days. So yeah, I mean, my phone was silent. I was feeling very sad that I don't care, people, what people talk about me on Twitter, Instagram, Facebook, all that. But I was expecting from my few friends, few colleagues or people I know, when I meet them. So I was expecting at least they will message me, even they didn't message me. So now, one thing I have learned after Paris, that don't expect anything from anyone, because expectations always hurt. So yeah, so since then I'm just, doing only those stuff which is making me happy, enjoying my life, be it doing shopping, eating the food which I love the most. So I'm just living the life because it's my life. I just want to enjoy it to the fullest. Wonderful words from Nikhat. Tania, coming to you, 2 questions. I'll keep it short. One, I want to know about the modern trend of chess content creation. We have a lot of chess content creators who are streaming chess and commentating on. You are yourself is a commentator, have been in the broadcast profession. How do you see chess content creation in the modern sports economy and going forward? Another one, chess is a sport which requires a lot of concentration. One wrong move and you are gone. So how does a player keep themselves stick into the game mentally during high voltage matches and all?
Some great questions there, but I just want to follow up on what Nikat, her story has been, and it makes me think about what aapne jo bola tha Suhas pehle, that we only see the success when it comes on, but the struggles that somebody goes through, or what athletes, because we are riding this roller coaster, winning, losing, ups and downs all the time. That's something that is not spoken about enough, and it's one of the very difficult parts of the journey. And I think we all can perhaps relate to what you said. I also, want to add to that in my experience. And again, success, failure, coming back, these are not just stories from sports. These are stories for all of you from everyday life as well. That I feel you have to be your own best friend. You have to sort of champion yourself. At least that's what sport has taught me. That success is really defined not by winning tournaments, but by your ability to go back to the field, go back to the arena, go back to the chessboard every single day, even when things get incredibly hard. And maybe that's what separates people who achieve success in all spheres of life, is just not giving up. And very often you have to champion it yourself. You have to tell yourself and remind yourself, because it is very, very lonely. So very proud of you. Yes, coming to your questions about content creation and sport, I think media, narrative, storytelling is evolving so much in our times. And really, sports goes beyond competition, because it's aspiring, it's inclusive, it's empowering. It's that one thing in the world that brings people together. Today, when you see content creation, news channels, it's all about TRPs, it's all about debates, it's all about conflicting opinions. But sports ही एक चीज है जब पूरी इंडिया साथ में आती है. Doesn't matter where you're from, doesn't matter what your background is. If there's an Indian athlete or Team India playing anywhere, everybody is feeling it. They're feeling the highs of winning and the lows of heartbreaks as well. And it's beautiful. I think it's a beautiful part of sport that through content creation we're able to bring any sport, all these incredible stories to different parts of the world. It's an alternative career options to many, many athletes, and I feel it's a very big positive that today a chess player in my field, for example, maybe some of you have heard of Gotham Chess, for example, Levy Rosman, or the Botez sister, what Chess Base India is doing as well. It's not just about the game, but it's about bringing the game to so many That's millions. my question was. Yes, and I think it's evolving in a great way, and I'm very happy to see that happen. And what was your second question? About focus. Yes, I need to focus. So it was about concentration and focus and how difficult that is. It is, but it's part of sports. It's part of anything that we do. It's part of discipline. How do you do it? Everyone has their own techniques. Because I've now started balancing broadcast and playing. Playing still remains my first love, but I will tell you that I sleep better when I'm commentating than when I'm playing. It's definitely harder to get sleep when you're in competition. Everyone has their techniques and their ways of blocking out the noise. I'm sure if you asked each of us in a more in-depth way, we'll all tell you that perhaps this is what we do to get into the zone, and you have to find that, what works for you. Because with social media, with content creation, also is this what Anju also spoke about, this additional noise around us. And how to block that out, how to focus on the job at hand, how to just focus on the question, what is your next move, becomes a very important part, and there are techniques that we've got for that. Thank you, Tania. Thank you. I will now take closing comments from my three remaining panelists. Suhas, tell us, if you could put your finger on one comeback moment, tell us what that comeback moment was. Because aapne to bola ki every time God gives you, in a roundabout way, एक comeback moment हमारे audience को बताइए. अच्छा, एक कमबैक मोमेंट बता रहा हूँ, तो उससे पहले अंजू मैम को बताना चाहता हूँ कि जब मैम ने 2004 में शायद जब आपने 6.87 मीटर्स 83 जब जंप किया था, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग देखते थे, टीवी में देखे थे, पहली बार मैंने, जैसे अभी ये रैंप दिख रहा है ना, डिस्टेंस को कोशिश किया था नापने के लिए कि अगर यहां से शुरू करेंगे तो 6.83 मीटर कहां तक आएगा. आप भी जब जाएंगे घर में तो कोशिश करिएगा कि 6.83 मीटर, मुझे लगता है पूरी रैंप है. इतनी मैं सोचता रह गया था कि कैसे कर सकते हैं ये. मतलब दैट इज टुडे आई एम प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू सिट नेक्स्ट टू यू. आई हैड सीन यू ऑन टीवी
एक दो और छोटी छोटी बात यह है कि आप रोजर फेडरर को जानते हैं? सब लोग जानते हैं? अच्छा, अगर कोई सो रहे होंगे तो कितने लोग नहीं जानते, हाथ उठा लीजिए। अच्छा, सब जगह है क्योंकि खाना ज्यादा बोरिया जी ने खिला दिया है। तो रोजर फेडरर अपनी कैरियर में 80% ऑफ द मैचेस ही हैज वन। आउट ऑफ दोस मैचेस जो हार गए वो छोड़ दीजिएगा, डू यू नो हाउ मेनी मैचेस, what percentage of the points he has won in those matches that he has won? It is only 55%. मतलब जो रोजर फेडरर जैसे जो लेजेंडरी खिलाड़ी जिन मैचेस में वो जीते हैं, उन मैचेस में ओवरऑल अगर 100 पॉइंट वो खेले हैं, इफ ही हैज प्लेड 100 पॉइंट्स, ही हैज वन 55 पॉइंट्स ओनली। मतलब आफ्टर एवरी पॉइंट दैट यू लूज और विन, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्रेश स्टार्ट। लाइफ इज लाइक दैट। आज आप हारे हो जीते हो, जो अगर हार गए तो आपके लिए कल है, जो जीत गए ना तो ये मान के चलिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप मैदान पे उतरेंगे, एक तो गेम 0-0 से शुरू होता है और जो हारे हुए होंगे ना वो आपके पीछे पड़ेंगे, अच्छे से पड़ेंगे। तो इसलिए कि हारने वालों को भी कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना है और या जीतने वालों को ही कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना है। तो जो आपने कहा कि बिगेस्ट कमबैक मोमेंट क्या है, तो आई होप कि मतलब जिंदगी तो अभी शुरुआत है, तो जो आने वाले दिनों में शायद ऊपर वाला ऐसे कुछ दे कि मैं बोलूं भविष्य में 10 साल बाद रेवस्पोर्ट्स की इसमें कि हाँ ये बिगेस्ट कमबैक मोमेंट है। क्लोजिंग बस 2 लाइन हिंदी में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश काडर में हूं, भले कर्नाटक का हूं, कि 2 लाइन की शायरी जो ये कमबैक मोमेंट्स के लिए और आप सब विमेंस डे में आप सब लोगों के लिए जिन्होंने इस चीज को जिया है, ये डेडिकेटेड है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश बहुत की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू फॉर दैट। Mona, again we are running out of time, so I will take very brief comments from the remaining panelists. लग रहा है बोरिया जी बोल रहे, इशारा कर रहे हैं कि जल्दी खत्म कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। So Mona, please identify your one big comeback moment, जब आपको लगा कि I'm gone, and then that one big comeback moment. शूटिंग में आने के बाद में बताऊं तो मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैंने ब्रोंज मेडल जीता था। एंड उसके बाद में मैं दैट वाज नॉट पैरालंपिक कोटा इवेंट, तो उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप था और एशियन गेम्स था जिसमें मुझे पैरालंपिक कोटा सिक्योर करना था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया और जो भी मतलब मैं बोलूं कि शायद लक साथ नहीं था, तो मैं 13th रैंक पे रह गई थी। सेम नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स थे, एशियन गेम्स के अंदर मैं 6th रैंक पे रह गई थी और दोनों ही इवेंट के अंदर 0.3 और 0.6 का डिफरेंस था पैरालंपिक कोटा के लिए। और उसके बाद लास्ट इवेंट बचा था जो मैंने मुझे कोटा जीतना था और वो था न्यू दिल्ली वर्ल्ड कप जो कि मार्च में था। और आई वॉज लाइक कि अब पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, आपने ऑलरेडी 2 इवेंट जो थे वो मतलब आप हार गए और ऐसे लग रहा था कि अगर ये नहीं तो फिर शायद वापस वही 4 साल की जो जर्नी वापस दिखती है वो आएगी सामने। बहुत सारे मैं कॉम्प्रोमाइजेस करके वहां तक गई थी, तो मेरे लिए वो कमबैक मोमेंट था। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ये जो 3-4 महीने की जर्नी थी, इसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपना सारा पॉजिटिविटी, अपना सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, अपने आप को बूस्ट किया कि तुम कर सकती हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मतलब तुम नहीं कर सकती हो। मैं मेरी आइडल जो है मेरी दादी को मानती हूँ, तो उन्होंने बचपन से वही सिखाया था कि अगर तुमने ठान लिया ना अपनी जिंदगी में कोई चीज हासिल करने का, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो 4 महीने मैंने हर एक दिन मेरी दादी के उस एक स्टेटमेंट को रिवाइज किया। मेरे वॉल पे आज भी मेरे सारे वो कोट्स बने हुए हैं जिनसे मैं खुद को इंस्पायर करती थी कि मुझे करना है, मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर हम खुद को चॉइस दे देते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है,
सक्सेस पाना, तो मैंने खुद के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी और वही मेरा सबसे बड़ा कमबैक था जिसकी बाद में मार्च में कोटा अचीव कर सकी थी। Thank you very much, Mona. My last question is to Dola. Dola, name one person in your life as an athlete. As we agreed, an athlete's life is full of comebacks. It's a cycle of comebacks, ups and downs, highs and lows. Name one person who has been like a pillar of support, your inspiration for your comebacks. स्पोर्ट्स पर्सन। No, a person Anything. close to you, in your family or whoever. ओके सबसे पहले तो सपोर्ट पेरेंट्स का है, क्योंकि जब भी कोई हम लोग स्पोर्ट्स में आते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट अगर घर से नहीं हुआ तो उस सपोर्ट नहीं रहने से आप आगे नहीं जा सकते हो। तो मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी था, कभी भी हारे जीते तो फर्स्ट मेरा पेरेंट्स है, देन मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ हम लोग आर्चरी में हैं, तो दोनों का सपोर्ट जब हम लोग गेम में एक साथ आगे बढ़ने लगे तो दोनों हम लोग काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था। हम लोग गेम में भी एक साथ रहते थे, कभी हार जाते थे तो अच्छा है, नहीं हारे, जब हार गए तो भाई का सपोर्ट आता था, नहीं नेक्स्ट मैच में आप अच्छा कर सकते हो। देन ए फैमिली सपोर्ट मुझे फर्स्ट डे से एकदम जब तक मैं स्पोर्ट्स की हूँ तब तक मुझे अपना फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। Thank you, Dola. We've heard of Thank sibling you. rivalry. Here Thank you it so was much. sibling support. More power to come back. More power to all these women and wonderful men everywhere for their comebacks. Life is full of comebacks. Let us have a big round of applause for these wonderful panelists.